हे गाइस, कुशाल हियर एंड यू वाचिंग माइनरटेक्टिप्स। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक पीसी बिल्ड करा था 30,000 रुपीज़ का, जहाँ पे हमने यूज़ करा था Ryzen 3 का 2200G। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं Ryzen 3 2200G के ऊपर एक डेडिकेटेड गेमिंग बेंचमार्क वाला वीडियो लाऊंगा। सो दिस इज इट। आज के वीडियो में हम लोग Ryzen 3 2200G के ऊपर ऐसे 4 गेम्स को ट्राई करने वाले जो कि बहुत ही हाई ग्राफिक वाले, जो कि बहुत ही मॉडर्न टाइटल्स हैं और सारे के सारे ट्रिपल ए टाइटल्स हैं, जहाँ पे ये जो ग्राफिक्स हैं काफ़ी हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स हैं। तो ये 4 गेम्स को मैं जो Ryzen 3 2200G के ऊपर ट्राई करने वाला हूँ। सारे के सारे गेम्स जो है लो सेटिंग्स में ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि स्टिल दिस इज़ अ वेगा एज ग्राफिक्स। तो यहाँ पे आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स यहाँ पे आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सारे के सारे गेम्स को जो है लो पे ट्राई किया है। तो यहाँ पे अगर आपका बजट बहुत ही कम है, मतलब एकदम कम है, आप जो Ryzen 3 2200G के साथ जाना चाहते हो, यहाँ पे अभी जो Ryzen 3 2200G यहाँ पे आपको 6,700 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका बजट एकदम कम है, इसके साथ जाना चाहते हो, तो यहाँ पे प्लीज वीडियो को पूरा देखना। इससे क्या आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे Ryzen 3 2200G जो है किस तरीके से मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल्स को जो है हैंडल करते हैं, या फिर उसमें आपको कितना FPS मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ GTA 5, Watch Dogs 2 और फिर यहाँ पे Battlefield 5, और यहाँ पे एक और गेम मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ Assassin's Creed Odyssey। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट द शो।
सो दैट वाज प्रीटी मच ऑफ इट गाइस। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे Ryzen 3 2200G जो है किस तरीके से सारे के सारे मॉडर्न ट्रिपल टाइटल्स को जो हैंडल करता है, या फिर आपको वहाँ पे कितने कितने FPS मिलते हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे आप Ryzen 3 2200G को परचेस करोगे या फिर उसके साथ ग्राफिक कार्ड लगा लोगे। दिस इज ऑल अप टू यू। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बताना कैसा लगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी करने के लिए। एंड ऑल्सो यू गाइस इन नेक्स्ट